Good afternoon, students. Now I am going to take maths class, and remember, HS second year is very important for you. Now, exercise 7.2, that integration is full of that is substitution. Now, if we take exercise 7.3, that is also a method of substitution, but little different way we have to do. See here, question number 1 of exercise 7.3 is given as integration sine square twice x plus 5 dx. See here, this we have no formula like that. We have the formula only either integration of sine x dx s cos x plus c, or we have integration of cos x, it is minus, is equal to minus this one, and cos x dx is, it is only sin x plus c. See, here to no square is there. Like in differentiation, we cannot use any power like that. So what to do with this one? So of course, one trigonometrical help we need. It is of from class 11. So maths is like that. It is related to the others this way. We have cos twice theta as one formula. It is 1 minus 2 sine square theta. See, these things we got in class 11. So from that we will write 2 sine square theta is equal to 1 minus cos twice theta. Why I will choose this formula? Only to this, that here power is 1. If power is there, we cannot do any integration. At present, for this what available formula we cannot do. General variables power we can do, but with the trigonometrical powers we cannot do. So of course 2 sine square theta is equal to 1 minus cos twice theta we are using. Behind that only that logic. So if it is theta, if we replace by 2x sine square twice x plus 5, of course its value will be 1 minus double of that angle. Here theta, here twice theta. So of course, if it is twice x plus 5, then its double, it will be 2 twice x plus 5. See, this is the thing. Then what advantage you will get? Of course, we can then use our substitution. So then if I take this 2 here, it will convert into half, and that's why we have to give one second bracket. So that is the thing we will do here. So of course it is half is constant, we will take outside the integration, and then second bracket 1 minus cos twice x plus 5, this is equal to dx. Now we have to break the integration. Half integration 1 into dx is dx minus half integration cos. Now if I take 2 inside this bracket, then it will be 4x plus 5 dx. See, now this is easier, and this we can use our substitution procedure. What substitution procedure? Definitely we will take then, let 4x plus 5 is equal to 1. We have chosen this as new variable, and it is our y. Now if we differentiate with respect to x, then it will be 4 dx. Differentiation of any constant is 0, so of course it is 0, and it will be dy. So what we are getting, that dx is 1 by 4 dy. So now we are going to use this one. Again, integration of dx, both are, one is opposite of other, so of course they will cancel, or you can use that formula, integration of x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. This we can use, or by that one, that simple thing, that integration and differentiation are both opposite of each other, so they will cancel each other and becomes x. Here substitution, half, this one we will write as y, so cos y, and dx we will write as dy by 4. 4 will take outside this integration. Now see, it is what advantage we are getting. We can use directly this formula. Here one thing you have to remember, x both are same, then only it can give sin x. So if it is
replaced by y, this is replaced by y, then this will also be replaced by y. So of course we will then write half x minus 1 by 8 sine y plus c. See, that is the thing you have to do here. Then our target fulfilled. Y is our creation, so y we will replace by this one, 4x plus 5 plus c. So this is our ultimate result. So we have completed question number 1 of exercise 7.3. Now I am going to explain this one by in Bengali. What we have done, that actually এখানে দেওয়া আছে ইন্টিগ্রেশন sin স্কয়ার twice x plus 5 dx, এটা দেওয়া। তখন কি করব, আমাদের তো এই ফর্মুলা আছে sin x dx is equal to cos x, cos x dx is equal to sin x। তো কি করা যায়, তো আমাদের তো স্কয়ার নেই, এখানে x স্কয়ার আছে, এখানে তো স্কয়ার নেই, কি করা যাবে, একটা ফর্মুলা ক্লাস 11 থেকে আমরা নেব, সেটা হচ্ছে cos twice theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব। সো এখানে cos twice theta কে 2 sin square theta 1 minus 2 sin square theta লেখা যায়। সো 2 sin square theta if we take in that side, এখানে নিয়ে এলাম, তো এটা হলো 1 minus cos twice theta। এখন এটাকে বদলে দেব, যদি এখানে থিটা হয় তাহলে twice theta, যদি এখানে twice x plus 5 হয় তাহলে এটা ডাবল 2 into twice x plus 5 নিতেই হবে। সো sin square এটাকে আমরা বদলে লিখলাম 1 minus cos 2 into twice x plus 5। নাও এখান কি লাভটা কি হবে, অফকোর্স যে এই ফর্মুলাটা আমরা বসাতে পারবো। এখন যদি আমরা এই দ্বিতীয় বন্ধনীটা তুলে দেই তাহলে কি হবে, 1 into dx dx হাফ হবে ইন্টিগ্রেশন cos, if we ব্র্যাকেটটা তুলে দিলে 2 into twice x 4x হয়, 2 into 5, আমি এটা ভুল করেছি, এখানে 10 হবে, সরি ফর দ্যাট ওয়ান। সো so we have to do like that, এখানে 10 হবে। সো আলটিমেটলি আমাকে এটা বসাতে হবে, এটা is equal to y। সো after differentiation with respect to x এটা হবে 4 dx is equal to dy। তো dx কত হলো, 1 by 4 dy বসিয়ে দিলাম এখানে। আফটার আমরা প্রথমে ব্র্যাকেটটা তুললাম, ইন্টিগ্রেশন 1 dx হবে, ইন্টিগ্রেশন এটা হলো, এবার এটা অপোজিট, তো কেটে গিয়ে x হবে। এই জিনিসটা আমি যদি সাবস্টিটিউশন করি, সাবস্টিটিউশন এখানে লাগছে প্রসিডিওরটা, তাহলে কি হবে, আফটার ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু x এটা হবে 4 dx is equal to dy। সো dx কত হবে, 1 by 4 dy বসিয়ে দিলাম, এটা y বসালাম, dx dy by 4 লিখলাম। তো এটা হলো x by 2। এইবার দেখো এই ফর্মুলাটা cos x dx এটা হবে sin x। তো একই প্রসেসে এখানে x এর বদলে y আছে, তো sin y হবে। নাও ওয়াইটা আমাদের তৈরি, ওটা তো দেওয়া নেই, তো সেটা বদলে দিলাম, ওয়াই দিয়ে এটা করলাম। नाउ आई वांट टू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। ये क्या है, ये दे रखा है साइन स्क्वायर भी, कुछ साइन स्क्वायर समथिंग दे रखा है, तो ये तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला है यहाँ पे तो पावर 1 ही लिखा गया है, साइन का पावर भी 1, कॉस का पावर भी 1, तो क्या लिखे, क्या करें। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल हेल्प लेते हैं क्लास 11 से। cos twice theta is equal to 1 minus 2 sin square theta, एक फॉर्मूला यहाँ पे है, तो 2 sin square theta इस साइड पे ले गया आया, cos twice theta उस साइड पे ले गया, तो क्या बनेगा कि जो भी यहाँ पे बिठाए इसका डबल एंगल यहाँ पे होता है। सो थीटा की जगह पे अगर हम twice x plus 5 लिखे तो यहाँ पे भी twice x plus 5 ही बनता है। तो नाउ तो इसकी जगह पे हम a रिप्लेस करते हैं, कर दिया मैंने। उसके बाद ये सेकेंड ब्रैकेट उठा दिया, उठाने के बाद ये बनता है हाफ इंटीग्रेशन dx हाफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे ब्रैकेट अगर हम उठा, इफ यू टेक 2 इनसाइड दिस ब्रैकेट देन इट इज 4x plus 10। अभी ये देखो ये दोनों एक दूसरे से काटता है, तो काट के x बनेगा, और यू कैन यूज दैट फॉर्मूला इंटीग्रेशन x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1। तो यही लिख दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा, यहाँ पे अगर y लिख दे तो क्या बनेगा, y आफ्टर डिफरेंशिएशन यहाँ पे 4x होगा और यहाँ पे dy। तो dx क्या होता है, dx होता है 1 by 4 dy। तो
1/4 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा. नाउ यू सी क्या है ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिख रहा है. अगर यहाँ पे x हो तो x बनता है, यहाँ पे y तो यहाँ पे भी y लिखेंगे. दैट इज द आंसर. सो यहाँ पे लिख दिया. नाउ हम लोग y पे छोड़ नहीं सकते, y तो हम लोगों का क्रिएशन है. y की जगह पे हम लोग 4x + 5 लिख दिया. सो दैट इज आवर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Now second question is like that. Integration sin thrice x cos 4x dx. So you see that earlier we have the power. Now it is power is not there. Here only given that sin into cos. So at present we have no formula for that one, because only integration of sine, only integration of cos is there. Hardly that power, that multiplication of something that we can use. Then what to do? Of course, we have to take the help of some trigonometrical formula. What is that formula? You have remembered that twice cos A sin B in class 11. In that formula, it is sin A plus B minus sin A minus B. That is well-known formula of angles addition. That is product of this one. We can convert it into this one. So many formulas are there. Out of that, you have to take one of them. So you have to remember that one. Some hard rules you have to do. Without that, we cannot do. So if we put here cos 4x, you treat as A and thrice x is B, then what you will get? See. Twice cos 4x into sin thrice x. This will give sin this plus that 4x plus 3x. Of course it is 7x minus sin 4x minus thrice x. Of course it is x. So what we are getting? Twice cos 4x is equal to sin into sin thrice x is sin 7x minus x. Why 7x? A plus B. 4x plus thrice x, it is 7x. 4x minus thrice x, it is x. So of course we can use this one. What advantage we will get then? Definitely we can isolate the integration and we can write this its value. So now 2 is there. So if I take 2 in that side, 2 will come as a what? Half, and you can give a bracket. So we can get one advantage. We can take half this side. Then inside first bracket sin 7x minus sin x into dx. See, that is what given, what we are getting. Now we can isolate this one. Half integration sin 7x dx minus half integration sin x. So now it is easy to solve. This one is what? Integration of sin x is minus cos x plus constant of integration. See, if x is replaced by any multiplication, suppose it is integration of sin ax plus b. I have written, okay, better I will not give this anything. A constant into x into dx, then it will be minus cos ax. See the formula what it is. Any constant, if it is multiplied with this variable x, x is our dx, then answer will be here cos ax by a. Cos ax by a, what constant it is, it should go below this one. So here also I will write, instead of a think it is 7, so minus cos 7x by 7. So it will be half minus, I will take here cos 7x by 7. So of course it is 7. So 7 into 2 I have written minus half, and then here also it is directly we can write minus cos x. So minus plus cos x plus c. So this is our answer. See,
This is also another type, and we can do by that method in Bengali. Now I am going to explain this one. Here it is given sin trisec into 4x cos 4x. So no way, nothing we can do at present. What formula we have, we cannot use this one. So of course we have क्या लेता है, तो जो ফর্মুলা যেটা আমাদের ফর্মুলা আছে সেখানে কোনো ফর্মুলা দিয়ে যাচ্ছে না, তো আমাদের কি করতে হবে, একটা ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল হেল্প নিতে হবে। ক্লাস 11-এ দেওয়া আছে 2 cos a sin b, সেইটার ভ্যালু হচ্ছে sin a plus b মাইনাস sin a minus b বসিয়ে দিলাম এখানে, কারণ a ধরলাম 4x, b ধরলাম 5x, a plus b হবে 4 plus 3 7x, a minus b হবে x বসিয়ে দিলাম এখানে। তারপর ব্র্যাকেটটা তুলে দিলাম, ব্র্যাকেট তুললে এই অবস্থা হবে ইন্টিগ্রেশন sin 7x dx, আর এখানে হবে হাফ ইন্টিগ্রেশন sin x। এখন একটা ফর্মুলা আছে sin x equal to this minus cos x plus c। এখানে যদি আমরা x এর জায়গায় ax লিখি, a কি, a হচ্ছে এনি রিয়েল নাম্বার, তাহলে কি হয়, রেজাল্টটা হবে cos minus cos ax, এটা ফলো করবে কিন্তু ডিভাইড করতে হবে a দিয়ে। তো আমিও এখানে এটা করলাম, sin x এর জায়গায় minus cos 7x লিখলাম, 7 দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম। এটা তো ডাইরেক্ট minus cos x হয়ে গেছে। সো এটা কি রেজাল্ট দাঁড়ালো, cos 7x by 14 and cos x by 2 plus c। तो एटाई होच्छे आंसर। हिंदी में अगर बोलूँ तो क्या है, ये दे रखा है, तो इसको हम ऐसे कर नहीं सकते, इसको यही फॉर्मूला डालना है। तो ट्वाइस cos a sin b, तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी फॉर्मूला पे जाएगा। तो a की जगह पे अगर यहाँ पे 4x लिखूँ, b की जगह पे 5x लिखूँ, तो क्या बनता है, यहाँ पे a प्लस बी मतलब 4x प्लस 5x दैट इज 7x होता है, a माइनस बी मतलब x बनता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ब्रैकेट उड्रॉ कर दिया, उड्रॉ करने के बाद इंटीग्रेशन एक ही जगह पे आता है sin 7x इंटीग्रेशन sin x। उसके बाद क्या होगा, ये एक फॉर्मूला लगता है sin x इज इक्वल टू माइनस sin x cos x इज देयर। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे ax, a की एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर अगर x के साथ जुड़ा हो तो उसका रिजल्ट बनता है माइनस cos ax बाई a, उसी a से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 7x ऑफ कोर्स माइनस 7x होगा, लेकिन 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। sin x यहाँ पे माइनस cos x लिख दिया। सो दैट इज आवर रिजल्ट, माइनस cos 7x by 14 plus cos x by 2। So that much for today, students. You have to give your present by going in the comment box, and you have to write your name so that we can give your daily attendance. And remember, attendance is mandatory. If it is less than 80%, you cannot sit in your final exam. So try to do the remaining sum. Next day we will again meet together. Thank you for listening.